falling. We passed by one small beehive और किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया. So it was good job. Thank you everyone. Guys, कैसा लगा? अभी मुझे मजा नहीं आया मुझे. Okay, so guys, there's certain people who were phenomenal. Certain folks scope for improvement, and certain people very bad. Very bad वालों को मैं one on one बताऊंगा. I'll talk about the good things. And I'll couple of people जब भी blindfolds निकाला वो लोग का तो I said and I removed the blindfold for him and her. First thing I said, you cannot talk. Yes, don't talk. What was in your mind? So after removing, we thought that we have a better vision. Now we can guide a little better, but we cannot communicate, so we'll have to change our way of communication. Super, you cannot talk. Yeah. We cannot communicate, you cannot talk, instead communicate. You will change modes or methods of communication. One. एक चीज़ का मुझे पूछना है कि जब भी आपका blindfold निकाला, when you remove the blindfold, why were still everyone holding hands? I am unable to understand this point. So the lead, I think, should have folded hands, because otherwise it would have gone haywire, because the second person was blindfolded. बीच में जो थे, I think they could have, I think आगे पीछे जा सकते थे. But exactly, beautiful. So super, person was really nice. I mean, guys, you know what I see, there are certain people a little selfish. Okay, और मैं वो individually बताऊंगा तो. Guys, when someone's blindfolded, they open up somewhere very helpful. Means they would also go to and fro. सबसे पहले हम लोग ने और वो नहीं हो रहा था. स्टार्टिंग में सब लोग ऐसे ही they could see and they were trying to help each other. I have it in a video. I was having a video. Now you can see and you're still going like this. Is it good productivity? Terrible. Ridiculous. Okay. The good productivity would be you stepping out. So मैंने जानबूझ के बाद में मैंने I pulled them out. I pulled them out of their comfort because they're very comfortable. अभी तो दिख रहा है. क्या है? I'm not falling. But in the long run, one of the team members might fall. Do you have to wait for a disaster or catastrophe to happen? Yes, no, maybe? No. Excellent. So what I did was I pulled them out of their comfort zone, gave them chance to lead. People did phenomenal. Ratmesh out here, Ranshi out here, Sajid, Komal, awesome. Some people, when I opened the blindfold, I was like, you were amazing, good, classic. I didn't know, you're so easy with your comfort zone now. The moment I put you back, okay, now you have to wear a blindfold. And after some time, we had opened up 70% of the blindfold. I actually repeat, 10 में से 7 दिन का blindfold फिर भी सब लोग ऐसे ही चले. I mean, you would have walked. Give me a hand. I mean, you would have just walked 2 people together. Means 3 people were blindfolded. 7 could see. You could have walked one to one, like in pairs, right? Possible? Yeah. Improvise कर सकते थे. What are you waiting for? Guys, accustom. See, Indian culture is good. Only problem is we've been ruled for over 300 years. Mughals, Iranians, British. Because of which ना हम लोग को laid back attitude हो गया है. Sorry. हम लोग को. I'm not counting myself. Okay? And whatever I say ना बुरा लगे तो again I said I'm sorry. I'm just being जो दिख रहा है. I'm just observing and talking. Okay, I don't want to show. I hate to sugarcoat things. I'm very clear. I expect you to break those shackles, break that comfort zone. It's okay ना. मैं थोड़ा और मेहनत करूँगा. ठीक है, you lose a few grams out here, no problem. Yeah, I mean, we will have a good lunch, a good breakfast. But imagine that help. The best part is, आप लोगों ने जिसका भी हाथ पकड़ा, और there were people who were like very nice. Some people were like ensuring that they were handling shoulders of individuals. They will not hurt the bush. Couple of times होने वाला था where I stopped. वो नहीं होना चाहिए था. But some individuals realize, yeah, she will hurt herself. You did that. I saw you doing it. I saw Sajid doing it. I saw Nakul doing it. It is very good. You have
So you feel for your people. वही चाहिए. See, someone told me in the night after dinner कि sir आपने आके मेरा shoelaces tie किया. Nobody did that before. I said you are my team member. I don't care. लोग क्या सोचेंगे? I don't care. For you, you are my buddy. And my buddy has to go up nice and clean. बीच में अटक गया तो कौन है? I don't care. Black, white, fat, thin. I have to go and help. I'll be very happy someday you sit on your team members. Do not use the word subordinate. I say team members, colleagues, terminal. Help him or her craft a meal. I'm sure किया रहेगा, right? Yeah. Instead of she or he coming to you, if you walk up to his or her terminal and do it, trust me, you will lighten up that person's day, afternoon, evening, night, whatever it is. I mean, that is like, that's a aha moment, like a euphoria moment. What else? Did you, anyone felt कि एकदम पूरा transformation हो gaya? अभी देख सकते हैं. Tell me if, let's start. Maybe start from you. One word, what do you feel? How did you feel? Yeah. पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगा था जब स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में easy. हाँ मतलब पहले नर्वस थी कि कैसे जाएगा क्या जाएगा, बट देन पीपल वर सपोर्टिंग. मैं पीछे वालों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, आगे से भी आ रहे थे, तो इट फेल्ट गुड. And at least people saved me from falling. I read two things. So there were people जिसका एक पैर रखा और ये रॉक मेरा शेक हो रहा है. I am blindfolded. मेरा ये रॉक शेक. Why would I pick up? I mean, like, my this leg is shaking. Okay, I can't see. If my this leg is shaking, I would not, on a shaking leg, I would not stand, na. Guys, a lot of people, even if ये leg shake हो रहा है, तो भी जोड़ के खड़े हुए. See, when you have one leg grounded, and grounded is anchor, okay, means नहीं हिलेगा. उसके बाद दूसरा पैर उठाना. क्या घाई क्या है? मैंने बोला जल्दी चलना. Everyone's like a runaway train out here. I don't know who's missing a flight. No, enjoy the moment. It's not the temple, it's the destination. The journey is so damn beautiful. Like you have an amazing journey. Your journey is something which you will remember. You will not remember कि ऊपर मंदिर में जाके दर्शन करते थे. अरे हम लोग ऐसे गए थे. Okay, that is when you add to your camaraderie. Okay, how do you feel? पहले तो मतलब डर था, फिर बाद में ट्रस्ट बॉन्डिंग एक्टिविटी बोल सकते हैं इसको कि पहले सामने वाले पे कितना ट्रस्ट है तुम्हारा. I didn't use the word trust bonding. Thank you. That's very beautiful. Thank you. पहले थोड़ा डिफिकल्ट था, फिर जो कोऑर्डिनेशन एक बन गया तो फिर इजी हो गए, और सबने बोलना बंद किया तो काफ़ी हेल्प हुआ. See, बोलना बंद किया. Guys, please सुनो. Take it to your workplace, your personal space. बोलना बंद किया तो काफ़ी कुछ easy हो गया. When we hear things, we have to just hear. और हम लोग सुनते हैं. It's not to answer. Take a pause. He said, very beautiful. He said, wait. Why am I talking? हाँ, let it process for 1 minute यार. अरे उसके बाद ठीक है. सो सबसे पहला था ना वो ये ट्रस्ट फैक्टर वाला था कि जब ब्लाइंड फोल्ड किया ना तब अपने में मतलब कौन पार्टनर था वो नहीं पता था. अगर पहले पता था तो एक डाउट रहता कि वो क्या करेगा कैसा करेगा, बट नहीं पता था तो एक ट्रस्ट करना ही था कि देखो अगर वो गिरेगा तो ही हम गिरेंगे. और सेम चीज़ मुझे मेरे साथ जो पीछे वाला था उसके लिए करनी थी. जो बेस्ट मतलब जो हम लोगों ने सबसे ख़राब किया वो लग रहा है ना कि हम लोगों ने लोगों को फील नहीं करने दिया. अगर हम लोग कम वो कम्युनिकेट करते बोलते लाइक के स्लो पा रहा है ये हो रहा है, अगर हमने लोगों को फील करने दिया होता ना तो उसको और मज़ा आती. वेरी गुड. सिर्फ एक मिस पॉइंट है कि वो गिरता तो हम लोग नहीं गिरते. हम उसको गिरने नहीं देते. यू आर होल्डिंग. he or she was protected from both the side. अगर वो स्लिप भी हो रहा तो भी सस्पेंडेड रहता था बिकॉज आपने दोनों हाथ पकड़े हुए. Okay, I was one thing I saw everyone was holding hands really tight. Means वो दिख रहा था. वो I should have said भाई वो लोग एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हाथ एक सेकंड भी नहीं लगा. I mean like जब भी मैंने लोगों के हाथ छोड़े ऐसे डैमेज to walk. I mean I was at times tough. I mean a job requires to be tough. So I was at times tough to walk. Okay.
So I accept that one. Beautiful. Thank you for the word trust. So जब स्टार्ट किया था इंडिविजुअल लेवल पर लगा था कि इट वाज डिफिकल्ट, बट व्हेन यू स्टार्ट एज अ टीम, सो टीम कनेक्ट हुआ और ट्रस्ट हुआ, सो इट विल बी इजी. Beautiful. Yes, I love the fact you don't know who's standing next to you, right? So you don't have an option but to trust. So I love. Yeah. So see, I kind of if he is your team member. See, just because you are comfortable with him or her, आज वो absent है. You were sent on a different project. So you have to wait till you get comfortable with someone. I want you to get comfortable on day one. First, I love one word. I mean, कौन था पता नहीं था. I have to trust him or her. The very first step you have to trust him or her is what I'm looking at. Beautiful. Don't you? Yes, I agree with whatever everyone said, but there's one thing that I observed when my blindfold was open, that इतनी आदत हो गई है इंस्ट्रक्शन लेके लीड करने की कि खुद से किसी के माइंड में ही नहीं आया. Beautiful, beautiful, yeah, beautiful, beautiful. So, and I really pray to God that everyone out there who is not in a TL or in a leadership position will very soon qualify, get promoted, elevated to that position. Be ready. Mind में नहीं आया तो अभी train your mind. Okay, this is you not training your body, train your mind. I would like to say कि जब टीम साथ में आती है तो टीम वर्क जब होता है तो it become easy to reach out to destination. Although Manish का ऐसे हो रहा था कि sometime his arm was paining, but at that time also he was holding my दो बार मैंने हाथ कोई आके छोड़ भी रहा था, but Manish was like no no no. वो मैंने because I opened up his blindfold, I tried to leave him out. But good, I like that. Thank you, Sam. पहले मतलब थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन फिर साथ में जर्नी स्टार्ट की, ट्रस्ट किया तो मतलब थोड़ा इजी हो गया. Thank you for using the word. Yes, ma'am. जब स्टार्ट किया ना तो पता नहीं था कि फर्स्ट तो कहाँ जा रहे हैं वो पता नहीं था. कई बार ऐसा हुआ कि बाजू में से भी लोग निकल रहे हैं तो पता चला कि 2 लाइन है क्या मतलब क्या. बट फिर जैसे कि पार्टनर्स चेंज भी हो रहे थे ना, तो बट इक्वली सपोर्ट, जो पहला था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, इक्वली गाइडेड एंड हेल्पेड. Nice. Anyone? yeah, so maybe you want to tell her वो ऐसा पास से बाजू में से क्यों हुआ. You were leading? Not leading. She was leading at that. No, I was leading at that point. So, और वो जानबूझ के when I do this, it's on purpose. Okay. I mean, we do a lot of running around up and down. हम लोग 10 बार भी भाग के तो समझ नहीं आएगा. हाँ, तो स्टार्टिंग में कैसा था, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं था. बट फिर एक दूसरे पे ट्रस्ट किया और बाद में सब चल रहे. तो वो सेंस भी किया कि यहाँ पे चल रहे हैं तो ये एक लाइन है कि वहाँ सेफ है और मतलब ऐसे चलना है, तो वो सेंस भी किया. तो वो भी हेल्प किया. प्लस नेचर का भी सेंस मतलब मैंने तो किया. क्यों? Thank you so much. One बाकी सब तो कवर कर लिया है from everyone. But one thing, we started with the limited resources. We only have I think 2 or 3 resources to guide. तो बाकी सब blindfold पे थे. And that was like and trust और struggle कर रहे थे सब लोग. And even after 5-10 minutes, you open up the blindfold for almost 60% people. Again, we are struggling. Thank you so much. This is very beautiful. Thank you so much. I love honesty. I love honesty. Thank you. Okay. So imagine, guys. So ज़्यादा resources not always helpful. Okay. And we have हम लोग को ना एक आदत बन गया है. बड़ा है तो बेहतर है, ज़्यादा है तो बेहतर है. It's not always good. एक्चुअली फीलिंग में तो ऐसा बोले कि मैं दोनों तरफ से ऐसे खींच रहे हैं. ये आगे फास्ट जा रहा है, पीछे वाला खींच ही नहीं जा रहा है. और सबसे ज्यादा इनका डिस्ट्रैक्शन था. That is something you got to improve. मेरा आवाज़ कहीं से पहचान लेती है. But you're too much of a distraction has been distraction. So you got to work on that. Sorry, feedback. बट यस आई फील लाइक एक डर भी था अंदर कि शायद कहीं पे स्लिप हो जाए, पर एक ट्रस्ट था कि भाई हाँ कोई गिरने नहीं देगा. सो कोई गिरने नहीं दिया. थैंक फॉर दैट. कोई गिरने नहीं दिया. इंटरेस्टेड था और ऑनेस्टली मेरे को इजी लगा कि जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे सिंपल वो फॉलो करना था, पास ऑन करना था. पास ऑन में कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है तो उसके साथ जैसे पत्थर है किस साइड है, राइट लेफ्ट, तो फील करके थोड़ा सा पीछे इंस्ट्रक्शन पास करना तो इजी. So one thing which few of you may have. So basically, say
Like right now I'm saying, अच्छा मेरे right में now lot of people ना बहुत लोग ऐसे भी चल रहे थे. So your right, I mean my right will be his left or her left. A lot of people, lot of guys and girls made this mistake. So bichara, that girl, instead of going right, she went left, or she was going to go in the bushes. And luckily, like me or Utsav were there, and हम लोगों ने get an idea. So वो एक, always remember where, how are you standing before giving an instruction. And just one more question. So also say now, if I can see, if I can't talk, I would use such movements. कि अच्छा, there's a bigger rock, you got to come over it. Because I saw कि public, people were not able to communicate. Means, अगर आप बात नहीं कर सकते, and there's a rock, तो he's like, I was like, उसको नहीं दिख रहा है, उसको seriously नहीं दिख रहा है, and you were like, I saw, I mean, 2-3 जन, sir, अभी आप लोग अपने में भी हैं तो आप बहुत लोग थे जो, I don't want to take their names, they were like, I was like, she can't see, man. I was like, what's wrong with you? So, guys, step into his or her shoes. You got to be there where he or she is. Otherwise, यही होएगा, you will hurt your team member. At the end of the day, क्या होगा? He or she चलता है तब चलाएगा, otherwise छोड़ के चला जाएगा. It's not good for you, not good for the company. So please, it's not because if you are saying something and he or she is not understanding, उसको help करो ना understand करने में. Yes, I need to sir. स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो पता था कि शायद मेरा नंबर 3rd या 4th पोजीशन पे है. जैसे पूर्वी ने बताया कि हैंड स्ट्रेच हो रहा है, बट इफ़ आई थॉट कि अगर मैं पीछे वाले का हाथ छोड़ दूंगा तो आई विल बी द लास्ट पर्सन. मैं अगर सोच रहा हूँ कि मैं 3rd पोजीशन पे हूँ, पर अगर यहाँ से छोड़ दिया तो मैं फिर लास्ट हो गया. सो आई नीड टू पुल अप माई टीम एज वेल, ताकि मैं आगे रह सकूँ और मेरी टीम भी मेरे साथ आगे चल सके. Beautiful, pull up your team. Every point. जब आपने अगेन ब्लाइंड फोल्ड किया मेरा 2 to 3 टाइम्स मैं गिरी. गिरी नहीं, वो about to fall. मतलब हाँ अबाउट टू फॉल थी मैं, और तब मुझे किसी ने तो सपोर्ट किया था, तो वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरे को गिरने नहीं दिया. Guys, I wanted, that's the only reason I corrected him was because you're holding, you're not falling. सबने कवर कर ही लिया है. Most beautiful thing of this activity is the trust within each other. We were trying my instructions instead of one less things. Right? As soon as you close his or her eyes, you keep off her mouth or his mouth. Right? So we have to try ourselves with 4 senses only. So we should have try ourselves with 4 senses. And we have to think that everybody have only 4 senses. 4 senses. Beautiful. I like that thought. Nice. I almost सारे पॉइंट्स कवर किए, बट जैसे आई वांट टू ऐड कि मतलब बोला है कि सब जा रहे हैं वो दिशा में जाना ज़रूरी नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड आपके पीछे क्या आ रहा है, आगे क्या जा रहा है, जस्ट थिंक कि तो ये पॉइंट करना है. No, just because everyone's going there, I need not go there. Thank you, Nakul. तो सर बाकी मैक्सिमम पॉइंट कवर हो गए, अपने पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने मतलब कई बार ऐसा भी होता था कि वो टाइट हो जाता था, फिर भी हम उधर स्टॉप करा देते थे कि रुको, अगर कुछ केवल जैसा लग रहा है उधर ही रुको, एक बार थोड़े रिग्रुप हो फिर आगे बढ़ते. और दूसरा ऐसा था कि कम्युनिकेशन जो था ना वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े ही लेवल तक जाता था. अगर आगे से आया ना कि रॉक है यहाँ पे, तो मैंने रॉक को बोला, पीछे मैंने बोल दिया, पीछे बोला, उसके अगर वो लास्ट तक जाता ना तो कोई उसके ऊपर तैर नहीं लगता, मतलब जैसे पास होता था वैसे. Guys, कम्युनिकेशन थोड़े लेवल जाए. Guys, ये चीज़ आपके वर्क प्लेस में बहुत इम्पोर्टेंट है. जस्ट बिकॉज इससे क्या हो रहा है, आपके मैनेजर ने कुछ मेल किया. नाउ you will probably sometimes send a mail FYI, sometimes you will think this is not important, and you will in your huddle you might cover 2 lines of that mail. What happens is आपके हिसाब से वो मेल में 10 लाइन में से सिर्फ 2 लाइन important थी. You read it, you said those 2 lines in the mail. You missed out on the details because you feel it's not important. That can be something. Communication अटक रहा है. That is something you're blocked. So don't do that forward. कम्युनिकेशन जो नक्कुल ने बोला एक पॉइंट वो अभी करते, और दूसरा कि जैसे
सबको आपने स्टार्ट किया तो आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि हैंड होल्ड करके चलना है, राइट? मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था हैंड होल्ड करके चलना है। पर ऐसा ऐसा मैंने हाथ पकड़ा नहीं था, मैंने बोला नहीं था कुछ। हाँ, yes, very good, beautiful word. See, condition. Thank you so much, Manish. I didn't want to say this, but I wanted to come from you. Guys, we get condition. Yeah. The reason I'm doing this, I want you to remove that thing out of your mind, that block. You don't need to get condition. हम लोग कंडीशन में फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद फिर ग्रोथ गेट स्टंटेड. आई डोंट वांट टू गेट कंडीशन. तो उसकी वजह से वही मैं बोला कि पहले स्टार्टिंग में सबने हैंड होल्ड करके चला तो सबके माइंड में वैसा ही था कि हैंड होल्ड करके ही चलना है. तो किसी के भी ब्लाइंड फोल्ड निकाल दिया तो सबने ऐसा नहीं सोचा कि 3-4 का ग्रुप बना के फटाफट ऐसे जा सकते हैं. तो ऐसे कर सकते थे पर वो शायद सबने नहीं किया, ऐसा सोचा भी नहीं. सबको वैसा था कि इंस्ट्रक्शन पहले से स्टार्ट है कि हैंड होल्ड करके चलना है तो वैसा ही चलना है. Assumption is a mother of dot. Thank you. Cool. स्टार्टिंग से ही मैं सबसे लाइन में सबसे फ्रंट पे थी, सो मुझे वो डर नहीं था बिल्कुल भी मैं गिर जाऊंगी बिकॉज उत्सव वाज लीडिंग. So Utsav was not leading by the way after some time. You're not aware. And most of time मैं blindfolded भी नहीं थी. So जो स्टार्टिंग के जो लोग थे उनको थोड़ी हेल्प कर पाई मैं, बट जो पीछे वाले थे उनको सबको नहीं कर पाई. सो इट वाज डिफ़िकल्ट कि आगे वाले जो है उनको आप इजीली गाइड कर सकते हो, मतलब जो क्यू में है उनको तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते. जो दिखता है वो बहुत इजीली you couldn't see behind, you couldn't just walk behind. And I just want to add up on this point कि जैसे इन्होंने बोला ना कि मतलब आगे से वो कर रहे हैं तो जैसे होता है ना कि मतलब मान लो कि हमारे सीनियर मैनेजर है, राइट? तो सीनियर मैनेजर तो हायर की वाइज वो नीचे हम वो फॉलो कर सकते हैं कि मतलब सीनियर मैनेजर हो गया फिर AM होगा, AM के बाद TL होगा, TL के बाद कोडर्स तक जो हमारे एम्प्लॉयज है तो वो एक हायर की भी हम फॉलो करें उस टाइम मतलब उसको वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा ग्राउंड लेवल तक, तो हम ऐसे हायर की वाइज उनको हेल्प कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. I think I was one of the first few जिसका blindfold निकाल दिया गया था, first one, yeah. So I was little bit disappointed because I feel with great powers came great responsibilities, and I kind of got absorbed into the momentary pleasure that wow, I'm the privileged one. So I started enjoying that moment and I let the time go by. And I could have done much better. I could have led the team. I did not do that because I was enjoying the moment. So it was a missed opportunity. So yeah. You get a lot more. Lovely. Thank you. So I would 90% admit blindfold. So I experienced this guy, Shubham, Aditya. You know, even with their blindfolds, they have the best. All three. Can you grab all three of them? The reason they were 90% blindfold, they had the best foot movement. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तीनों को blindfold करना है because even with the blindfold, see the movement was very cool, very nice. और rock आ रहा है ना, so say for example if I'm getting where मेरा पैर shake हो रहा है तो they would just negotiate the rock, put it on the other side. All three were doing that. Yep. So I experienced. Okay, कुछ नहीं किया उसने. Outside only, don't worry. Yeah, so I experienced two methods of communication first of all. When I know that Prathamesh was in front of me initially, where he was talking and when his blindfold was off, I experienced that he stopped communication, but support was same. Support was that same. was the method. Guys, of जब भी changing आपके method of- leaders ने या people were communicating, talking, means even with a blindfold on, वो लोग ने बात करना बंद किया. फर्क रहा कुछ भी? Yes. How many say yes? Yes. Very good, thank you. It's because you're very comfortable listening to the voice. The day your leaders stop communicating is not because they don't want to help you. They have pressures. वो लोग आपको सब लोग ना people came and complained me yesterday and I will not tell you guys, but sir ये तो हमारी बम्बू करते हैं. Sir, it is fair, okay? It's not something that they enjoy doing that bamboo. They do that bamboo because वो लोग नहीं करेंगे तो उनके बॉस उनकी बम्बू करेंगे. It happens, okay? I've been in corporate for 14 years, okay? I have 600 people का team और मुझे पता है how does it work. You are responsible board of directors और हम लोग नहीं करते और स्टॉक मार्केट में ये रिपोर्ट जाएगा तो you killed.
Kid is pink slip. Oh, yellow slip, whatever. You missed. Yes. So I need to continue. Please. Yeah, so my trust was in sometimes in soft hands, sometimes in hard hands. So the person whom I was guiding to the big I probably she was back, and then the time came. She was learning from me, right? And when the time came, she came in front of me, and now she started to guiding me. So that was a give and take, and she that was you should learn from her. Yeah. That we changed. Yeah. I got goosebumps, man. Thank you. So Yeah, it was beautiful. our purpose. Yeah, See, yeah, I was changing moments. I felt that, yeah. I saw that people got comfortable with each other. So the moment you guys got comfortable, I kept you moving up and down. Yes. समटाइम्स वी नीड टू चेंज द पैटर्न टू ड्राइव अ बेटर रिजल्ट. जैसे कि पहले जब हम ब्लाइंड फोल्ड्स पे थे तब हमको इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा फॉलो करने थे टू बी सेफ एंड रीच टू द डेस्टिनी. बट उसके बाद जब ब्लाइंड फोल्ड हटा दिए गए थे तो हमको अपना पैटर्न चेंज करके दूसरों को गाइड करना था ताकि वी कैन रीच देम सेफ टू द डेस्टिनी. I want to conclude. Who's all done, right? Yeah. मैं इससे सीखा कि लिसन केयरफुली एंड टॉक लेस. क्योंकि ना जब हम स्टार्टिंग किया तो सब पैनिक थे. वेट रॉक है, धीरे चलो, ये करो. बाद में सब वो साइन लैंग्वेज फॉलो करने लग गए AO वाली. वो किसी ने आवाज़ लगाई तो सब जगह पे रुक जाते थे. मतलब खींचना नहीं पड़ता था या कोई आपने खींचता नहीं था. तो पहले तो स्टार्टिंग में सब रॉक है, धीरे खींचो, मेरा हाथ पेन कर रहा है वगैरह वगैरह हुआ. तो मुझे लगता है ना हाथ पेन नहीं कर रहे ना किसी का. आप लोगों ने बहुत खींचा एक दूसरे को. ठीक है. आई एम वेरी हैप्पी दैट नो वंस हर्ट. There's just one observation in this that when we all were blindfolded, right? The method of communication was very easy for everyone, right? And everyone was on the same level, same playing field, right? तो जब भी सब लोग सेम लेवल पे होते they were communicating better, they were helping each other, वो support ज़्यादा था. And when some of them became the leaders, right? जब वो change हुआ, वो communicate नहीं कर पा रहे थे और वो same line में था, इसलिए वो नहीं हो पा रहा था. Like it was the one single line. But once when these people who were not blindfolded got to lead, right? It was completely different story. So we need to understand that जब भी blindfold हटता है, we have to like lead from the front. So guys, this is one of the reasons. I'll probably break his comments first time when everyone was at par, level playing field. This is one of the reasons I'm asking you to stop using the word sir and ma'am. Provide yourself a level playing field. It's not something which somebody else has to provide. You have to provide that to yourself. Avoid using the term sir and ma'am. कोई PhD हो गया हमारे पास है. कोई PhD है यहाँ पे. मुझे भी सर पढ़ाना पड़ेगा इसीलिए. So please avoid that. Okay. I've done this for Indian cricket team. I've done this for RCB. I've done this for a very elite team. Okay, in a very who works in a very high-profile setup. And in that setup, a fresher, a CEO who might be a 53, 54-year-old, they will call him by his or her first name. Okay, so please avoid using the term. Whenever you want to add any